ये कि एक ऐसा काम पाकिस्तान में होने जा रहा है जो आज से पहले नहीं हुआ। वीलॉग्स की दुनिया में ये सबसे बड़ा वीलॉग। जो कांडा ने जिस तरह से इसमें अपनी एंट्री और जिस तरह से इसने ओन किया है हमारी लैंग्वेज को भी, जो आप लोगों ने जो क्रिएट किया, जो मैंने सुना, मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए सुन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज जो मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, जो मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वीलॉग्स की दुनिया में ये सबसे बड़ा वीलॉग होगा। ये मेरा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा काम पाकिस्तान में होने जा रहा है जो आज से पहले नहीं हुआ। कई फॉर्म्स में हुआ, कई और तरीकों पे हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है। और मुझे ये एजाज़ अल्लाह ताला ने दिया कि मैं उसकी पहली रिपोर्ट आपके सामने लेके आऊँ। असल में मैं हमेशा से, आपको पता है, और ये कोई पहली ढकी छुपी बात नहीं है, मैं कितना बड़ा एडमायरर हूँ खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब का। मैं कितना बड़ा उनका फ़ैन हूँ। और वो दुनिया में जहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी ज़िंदगियों में रंग बिखेर रही होती है। और राहत फ़तेह अली खान को जो मकाम अल्लाह ताला ने मौसीकी के अंदर दिया, राहत फ़तेह अली खान साहब आज तो यहाँ पे हैं, कल इनको अल्लाह ताला ने एक और एजाज़ दिया, इलाल इम्तियाज़ मिला। और क्या कहते हैं कि ये बड़ी छोटी सी रिकग्निशन है इनके सफ़र की, और इस तरह पता नहीं कितने अवार्ड्स इनके उसमें हैं। लेकिन अब जो ये काम करने जा रहे हैं वो इतना को बड़ा काम है, इतना को बड़ा काम है कि आप लोगों के लिए खुद हैरानी होगी। मैं उसके मतलब नहीं, खान साहब वेलकम वंस अगेन, और खुद ही आप एक्सप्लेन करें कि ये क्या। पहले तो मुझे ये बताएं कि काफी लोग जल नहीं गए कल आपको देख के, यार आपको अवार्ड मिला तो जल गए, भुन गए, सड़ गए, मर गए? नहीं ऐसा, खैर मैंने तो नहीं ऐसा कोई एलिमेंट देखा। सभी ने खुशी का इजहार किया है। मेरे जो जितने दोस्त थे, जितने अहबाब, उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद के मैसेजेस किए। और बाकी रही बात के अगर कोई इस तरह का कोई एलिमेंट किसी में आया भी होगा तो ये अल्लाह जानता है कि अल्लाह ताला ने किसको इज्जत से नवाजना है। तो ये सब इज्जतें वो इज़्ज़ुमंतशा, ये इस पर हमें बिलीव है और मेरा भी इस पे इत्तेकाद। अब there is a very special guest that we have. She's come from Italy. Her name is Gioconda. और अगर आपने कभी पावरोटी का नाम सुना है, जो दुनिया ओपेरा का सबसे बड़ा लेजेंडरी सिंगर, तो जियोकॉन्डा जो है ये पावरोटी की स्टूडेंट रही हैं। बल्कि एक कंपटीशन था म्यूजिक का ओपेरा में एंट्री के लिए, तो इन्होंने वो उसको जीता कंपटीशन को। पावरोटी उसके वहाँ पे जजेस में थे, तो वहीं पे उन्होंने इनको पिक किया और इनको अपने साथ ले गए। लेकिन अब ये इस वक्त लाहौर में बैठी हैं, पाकिस्तान में बैठी हैं। और खान साहब क्यों बैठी हैं? एक्चुअली जियोकॉन्डा इज अ वेरी biggest singer in opera I have ever listened. ये biggest in size or biggest No, in singer? the big, sorry, the biggest voice biggest voice, okay, I ever have listened. She is a goddess of his vocal. Oh, mashallah. Wow, she is the brilliant, and she is so flexible to join my music, and she let me join in her music. अब बेसिकली क्या कर रहे हैं ये लोग फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो कोंडा ने इससे पहले ये किया, इंडिया में भी किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो इनको तसल्ली नहीं हुई। इनको ये समझती हैं कि वो हाइट्स नहीं उनको मिली उसमें, जो ये यहाँ पे राहत फ़तेह अली खान और इनकी टीम के साथ काम करके ये एक्सपेक्ट कर रही हैं। लेकिन जब आप फ्यूजन म्यूजिक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में अलग अलग ख्याल आते हैं। आप लोग क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? हम लोग एक ऐसा म्यूजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि इससे पहले ये पहले नहीं हुआ है कि कव्वाली विद ओपेरा।
ये दुनिया में नहीं हुई पहले। ये दुनिया में पहले नहीं कभी भी हुआ। कवाली विद सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने कवाली गाई हुई है। खान साहब ने भी पीटर गैब्रियल के साथ की थी, उन्होंने वो वाली कोलैबोरेशन की। मैंने सिम्फनी के साथ 2008 में कर दी थी। हमने 3 शोज किए थे बर्मिंघम सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। मगर ये जो एक्सपीरियंस में अभी हम एक एक्सपेरिमेंटल कोई चीज कर रहे हैं, वो इट्स बियॉन्ड माई वर्ड्स। मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं, मगर हाँ ये जरूर कहूंगा कि ये वाला म्यूजिक जो है, जिस टाइप ऑफ म्यूजिक जोकांडा ने जिस तरह से इसमें अपनी एंट्री और जिस तरह से इसने ओन किया है हमारी लैंग्वेज को भी और हमारे स्टाइल ऑफ सिंगिंग को भी। मैंने अपना जो सुना है, आई एम वेरी अमेज्ड। तो आप लोगों ने जो क्रिएट किया, जो मैंने सुना है, तो मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए थे सुन के। और अनफॉर्चुनेटली मैं उसको इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि अभी ये लोग वीडियो बना रहे हैं। तो अगर मैं पहले रिलीज कर दूं, अपने शो पे रिलीज कर दूं, तो ये उस असल वीडियो आएगी नहीं, उसको स्ट्राइक लग जाएगी यूट्यूब से। तो इसलिए जरा सा बर्दाश्त करें, थोड़े दिन की बात है। मुझे लगा कि मैं नहीं सोच सकता था कि कव्वाली और ओपेरा का कहीं पे संगम हो सकता है, लेकिन ये बड़ा हसीन संगम हुआ है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ जोकांडा कि उसने किस तरह से अपने आप को इसमें अपने कंफर्ट जोन से, आप जिस तरह से आपने कहा कि शी केम आउट विद हर कंफर्ट जोन। तो ये इतनी जोकांडा में वैरायटी है। हम तो स्टूडियो में पूरी पूरी रात जो है वो इनके एक्सपेरिमेंट्स जो है वो सुनते रहते हैं। तो शी इज़ हेयर कपल ऑफ वीक्स अगो, और अभी हमने आगे जो 3 से 4 हमने इसके सॉन्ग्स और भी बनाने हैं। जोकांडा, वेलकम टू द हॉल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने सुना आप उर्दू बोल लेती हैं। हाँ, कितनी? 80%। 8%, which is good. I mean, मैं तो 8% इटालियन नहीं बोल सकता। धीरे धीरे you can also learn. Maybe. Never say never. But I am so excited. Pavaroti's prodigy and a student comes to Pakistan. That is huge for us. Actually, I'm honored to be here today in this studio and most of all to collaborate with such a living legend like Rahat Fateh Ali Khan. And मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि ये पहले टाइम एवर प्रोजेक्ट है फ्यूजन कव्वाली और ओपेरा के साथ दोनों एट द सेम टाइम। तो ये प्रोजेक्ट कैसे, हाउ डिड इट born? इट्स लाइक कि मैं बहुत खुशी हूँ कि इतना स्पेशल आदमी राहत सर है कि इट कीप्स दैट बच्चा का प्योरिटी का दिल। तो ऐसा वेरी फास्ट, बहुत बहुत जल्दी we did such a huge and big song that you just got the chance of hear or listen to in a direct way, because all the geniuses of the world I was lucky to collaborate with, like Ennio Morricone, who is a Grammy Award winner, Luciano Pavarotti, they all have this point in common. एक common point है कि they keep दिल का purity. तो ऐसा है कि जल्दी जल्दी एक नया प्रोजेक्ट without too much thinking, मुश्किल ये क्या है, just direct flow में ये गाना was done बना था। तो this is the beauty of this project, and this keeps me very happy because actually there are few people in the world who can do that. And also for me it's been beautiful and challenging to go out from my comfort zone, because मैं like चौथा वाला बच्ची हूँ कि I want हमेशा हमेशा कुछ नया वाला discover में चाहिए। तो this is something that it's something new, बहुत innovative from musical point of view भी है। When we talk about opera, when we talk about the tenor, when we talk about the soprano, obviously we talk about not only singing but acting also. हाँ बिल्कुल। So have you done any
opera that involved acting and all that? Yes, of course. All the actually, I was very lucky to do all the main role, the protagonist role. So, बहुत बड़ा responsibility Which था one? मेरे लिए, Which like one? Traviata, like Mimi, Bohème, and many others. So, They're tough ones. basic, They're the different toughest ones, one. yeah. So every time, Amesha, I go deep in the history of the character. I read so many books. अभी मैं 1000 book I read so far in life, and my mother ka gift also was since childhood a doll for Christmas time and a book, kitab or doll. So dono path. It was like you have to be also brain. You have to have brain, not only the fashion fancy thing of being a singer. You have to be also. You have to have knowledge. When you are on stage, when you are emoting a character, let's say there is a high note, there's a low note, and then there's a sad note in it. And it also has to come up with your expression. Yes. And your movement. Yes, and all of that. course. We have a proper director. It's like a set of a movie. Yeah. But the most difficult thing is that in the movie, agar kuch galat hai, you just cut and paste and then you can repeat it again and again. लेकिन जब live है, तो कुछ chance और नहीं मिलता. So you have to be perfect in that moment at that time. Let's take one role. Yeah. And say you have to give different emotions like being afraid, being fearful, and then death. Yeah. All of them. Like for example, there is Traviata by Violetta. Traviata, okay. Yeah, she starts like a small little girl, and then there is the evolution. Yeah. She has also to change 3 voices. So, like for example, she is like when she's imploring the future father-in-law, which never became the father-in-law actually because she died before. That. So she's like. So she actually, you have to feel that crying in your voice. Yeah. Or then when she is afraid that something is happening to her, her, yeah. like means he's coming there. She's desperate. So you have to convey from the initial act, she's all happy. She says, let's have a cheers, let's drink some party things in the first act, and then the evolution in the last act when she's dying, it's so dramatic because in the initial part she's she also laughs. She's like very coquette, we say in French language, like very fancy, very glamorous. And then the evolution that in 3 hours, because the opera is 3 hours, you have to convey all these different nuances, all these different chances. So you have to be and so we studied at the University of Music. We study a separate course. One of our exams is acting. Are you really fond of the late Pavarotti or the late Salieri? Because I mean, suddenly, I see the darkness of Salieri over there. Yeah, actually, when I do some role, I basically empty my mind. So I try to get as less conditioned as possible so that I can convey always something new. So sometimes, of course, you have to give that dramatic things so you actually eat, let's say, you feed yourself with as many as possible, kind of even movie, reading or whatever theater. So you get into the characters basically. खान साहब मुझे ये बताएं कि ये जो फ्यूजन है, अब आप लोग करते हैं सरगम और वो सारे गामा पादा नी जो भी है, ये लोग करते हैं डोरे मी फा सो ला टी, ठीक है ना उसमें, और ये नोटेशन में है और आप सीरीज में है, यानी सारे गामा, यानी अब ये मेलोडी और ये नोटेशन, इसका संगम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम जस्ट एक लैंग्वेज पर नहीं डिपेंड कर रहे हैं,
कि वो सा है तो वो डो है, ये गा है तो वो सा है, मतलब ये नहीं है. वी आर बिलीव इन साउंड्स. तो फोनिक्स बेसिकली कर रहे हैं. या तो मुझे ये बताएं कि इसमें ये कैसे आपको पता चलता है कि जी हमने मसलन फर्ज करें आपने सी शार्प से शुरू किया, जो हमें एक देसी एक टोटका है हमारा, Yeah. और वहीं पे लाके आपने खत्म करना है उसको, तो इनके साथ आपको कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि वहीं पे लाके उसी नोट पे खत्म कर रहे हैं? एक्चुअली बिकॉज ऑफ उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बिकॉज ही यूज्ड टू लिसन द वर्ल्ड म्यूजिक अ लॉट, चाइनीज म्यूजिक. हम अमेज्ड होते थे, हम हैरान होते थे कि यार हमें तो समझ आ रही चाइनीज म्यूजिक की, हमें क्या समझ आएगी, बट ही यूज्ड टू लिसन ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक. तो मैंने उनके साथ रह रह के मैंने ओपेरा की जो सिंगिंग है वो सुनी हुई थी, और मुझे अच्छा भी लगता है इनका जो स्टाइल है, और इनकी जो एक पावर है, वॉइस जो है वो पावरफुल वॉइस है. और अभी आपने सामने देख लिया कि ये कहाँ से शुरू करके फिर उसको सॉफ्ट कर देती है. ये आम बात नहीं है, आम सिंगर ये कर ही नहीं सकता. पहले ऑक्टेव से पांचवें ऑक्टेव पे जाना, फिर नीचे आना. सबसे पहले तो इनके पास 5 ऑक्टेव है, हमारे पास 3 ऑक्टेव है. और 3 बड़े वाले के पास है. जी जी, हर एक के मतलब पास पूरे हमारे हारमोनियम में 3 ऑक्टेव्स हैं. मदरस्तान, तारस्तान, ये तो कोई और स्थान ही को मतलब को छूते हैं. और बट वन थिंग जो I realized when you were sort of displaying that there's a tinge of Russian influence over there, more than the Italian. Are you inspired by the Russian opera? Not Because really, actually. It did sound heavy and like. Actually, that's more like a natural texture that we have. So even in the soprano, there are a light soprano, lyrical soprano, and heavy, let's say, dramatic soprano. Dramatic is Italian. Yeah, right. yeah. Russian is heavy. Yeah, it's heavier. Yeah, actually, the Russian voice, as per their bones and their structure of the body, because actually we are our own instruments. Like the guitar, you have the wooden resonance box, which allows the chord, the strings of the guitar to play. So we have these vocal cords, which are the structure, the box, the wooden box, which is made of bones. So even the way the bones and flesh, basically it's our instrument itself. So as per their physiognomy themselves, they have such an, even the nose, this the round, the shape of the face. It's very important to determine how heavy also a voice can be. So actually they tell me I'm looking like Russian because I have this broad. So maybe I am just natural like this. So when you work with Ustad Rahat Fateh Ali Khan, do you compare it to anything like Freddie Mercury or Bocelli or Pavarotti and Tom Jones and the kind of work they've done? His ductility makes me remember about Luciano Pavarotti, who used to be my teacher, of course, for that open-mindedness and also that kind of immediate getting the result and the perfection. We got the perfection without even rehearsing much. That was the beauty. And Freddie Mercury is brilliant, by the way. Yes, for the presence of stage, his ductility. I've heard his songs that he has also done in Bollywood, where he can change his voice, he can go in another flavor, in another atmosphere, even almost going into the rap. So the modernity of these artists, which was typical of Freddie Mercury. He's actually very contemporary. Like, that's very rare, very rare. Only genius can have this quality. कुछ हमें जैमिंग करके तो दिखाए ना यहाँ पे साउंड्स की. Let's have you both jamming over here. Okay. For maybe a few minutes. There was it's gone viral in Instagram. Like, got so many. One beautiful video where we were just doing. Okay. Good.
India. Just came now in a flow. Amazing. And that's the beauty that the music has only one universal language. Yeah. You know, you could be in any language and it That's- will come Yes. together. Actually, it's the language of love, because actually we are all human beings under this sky, and we can communicate all without language boundaries through music. But That Italians are very arrogant. They don't like to team up with No, people. the French are more actually. We are the second. Even with Mozart, they could not accept Mozart. That was at that time, because you know the high level politician in Italy were always kind of proud, but nowadays we're very open But towards are you that. having any opera in German now? Yeah, Because that was yeah, the issue at yeah. that Actually, time. I also sing in German language, like some like the Zauberflöte in German language, the Mozart compositions, opera that are still written in German. I sang that. I also did at my university as a specialization in Liederabend, which is like the chamber music in German one of his language. symphonies, number 40 basically, has been used again and again by Indians and Pakistanis. Yeah, I in saw that. films, like, Yeah. Yes, yeah. Also, there is one song. "Itni hai mujhse to pyare bada, hai na hame ke pyare." It's also taken from. Yeah, that is- Actually, I also copied one. That's a pop song, Italian. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono un italiano, vero? And they did that version. Something. I think Nashar Pyar. Yeah, that was a very popular song in Italy. Yeah, I mean, Indians can copy anything. Don't worry about that. Yeah. Khan साहब, what next इनके साथ? क्या क्या हो रहा है? अभी हमने एक सॉन्ग जो मैंने आपको सुनाया, हमने वो किया, उसका वीडियो हमने उसको किया है और वो एडिटिंग पे है। और फिर हमने पर्शियन एंड पंजाबी कलाम जो है वो मैंने जो कांदा ने वो भी गाया है। अभी आपने मुझे बताया ये बुल्ले शाह को कर रही है। बुल्ले शाह का भी बीच में आ रहा है ना, कलाम बुल्ले शाह का भी बीच में है, बुल्ले शाह साहब का। तो she sung very beautifully. Actually, I'm so happy to have been, let's say, kidnapped by music in Pakistan, because the initial I just came from Dubai and I thought, okay, I will stay here maybe 3-4 days, we'll do this song and then I'll go back to Europe because I'm carrying on some other project with European other musicians. And then actually this song was making us so enthusiastic and so beautiful that actually we are planning to do 5 more songs and also some other surprise we will not say right now. So Some we other are, if it's Big a surprise? surprise, we will be ये surprised. आप सारे गैस करना शुरू हो गए, मेरा कसूर नहीं है। Stay tuned, ये बड़ी guys. सरप्राइज नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये खान साहब है, पलटे देते हैं सिर्फ, पलटते नहीं है। आई मीन ये म्यूजिक की बात हो रही थी और क्या बात Yes. No, in the sense of live shows, So let's not reveal what Tell me one exactly thing. the concept we are planning to. Give me some glimpse into what you can do with Bulle Shah. With With Bulle Shah. Shah? नहीं करना अभी? Like what? अभी रन है। अच्छा। We keep it secret. We keep it secret. Okay, that's a secret, right? In the next episode. Oh, So okay. guys, stay tuned. Now, Don't miss any episode of this awesome But- cultural journalist जो मैंने here. सुना है अभी, sorry? I was telling to your audience to stay tuned in the next episode to not miss anything from such a cultured journalist. thank I was impressed in our conversation how wide That's culture why you I have said- in every field, in That's why I come history, here. in geography, No, in anyway, music, I came in just came this. here. That's what actually he told me. Yes, you please dress up. We finished this morning at 8 a.m. the second Yeah, song. I mean, So I just woken up. I came. He called me. Let's go. This is the best actually journalist here. So I said, okay, man, I'll just man, wake I- up as I was with I the just same love- But yesterday's makeup. and I'll- now I know the how genius he is in the musicology actually. Yeah, He yes. know every singer Yes. and every type of the singer. And also in Well, the I mean, Western music, because what is That's normally Kya baat?
और सर हमारी खुशकिस्मती है कि हम बड़े लोगों को देखते हैं, उनको सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अच्छी ज़र्फ है, आला ज़र्फी का दे रहे हैं। और ये कोई छोटे लोग तो नहीं है ना जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी खौफनाक बलाएं हैं बहुत सारी है। तो और अल्लाह ताला ने वो जो है पता नहीं किसको कहाँ पे क्या हुनर दे दिया। हम सब कॉन्टिनेंट में भी है, बाहर भी है। अब प्रॉब्लम ये है, एक आप पे लोग जरूर एतराज करेंगे, जैसे जो पीस मैंने सुना कि अगर ये सही फ्यूजन, ओरिजिनल फ्यूजन है तो इसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स क्यों मिसिंग है इस आपकी रेंडिशन में? वो एक्चुअली हमने उसका जो पार्ट है वो बना लिया है। हम जो लाइव ऑर्केस्ट्रेशन है वो हम इटली से हम करवाएंगे। हमने म्यूजिक लिख लिया हुआ है। ये तो एक जस्ट एक यानी लिख आप रहे हैं और प्रोड्यूस वहां लिख रहा है कामरान अख्तर साहब, कामरान लिख रहे हैं। तो ये पूरा म्यूजिक जो है वो उन्होंने, इसकी म्यूजिक की जो अरेंजमेंट्स हैं वो उन्होंने किए हैं और आइडिया ऑफ कोर्स मेरा और जियो कांदा का। और ये बैलेंसिंग का होगी, इसकी बैलेंसिंग बड़ी बैलेंसिंग भी हम यहाँ से नहीं करवा रहे। जियो कांदा विल हैव इट एंड वो इटली से या एड्रियान एक प्रोड्यूसर है जो कि बहुत अच्छे इस मामले में, जो कि इसको मास्टरिंग करेंगे। Actually, I want to. By the way, I mean a suggestion. I mean, किसी को पसंद लगे या ना लगे, इंडिया में बहुत अच्छा काम ये हो सकता है बिकॉज उनको दोनों साउंड्स का पता है ना। जी आपके भी पर्दों का पता है, उनके भी उसका सोप्रानो का। These Akhtar has been immense and fantastic. I want to take this chance to be thankful to him because he is also very, very broad-minded. Like, and he did such an awesome work also in very short time, and he has a vast knowledge of all the genres of music, not only Eastern music, also Western. Seriously, so we should also give to him part of our success for sure because. Seriously, so I was think very happy to collaborate with him. कामरान को बड़ा काम करना पड़ेगा इसमें, यानी बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा। ही इज जीनियस है और ही कैन डू ब्रिलियंट गाय। अब ये मुझे बता, आर यू हैप्पी विद दिस टीम? With the team? Yes, of course. It's like a family. I loved it. Since the programmer, the sound engineer, all the people around, his wife, who was, I want also to be thankful to Nida for also being me part of the Pakistani culture, also from the dressing, the makeup, and the daughter who has such an amazing voice. MashaAllah, she's so amazing and so lovely. You know, there's one problem with his wife. She gives a lot of food to eat all the time. She's amazing and she's so beautiful. Actually, the first time I met his wife, she was with the daughter. I said, okay, he told me I have 2 daughters. I thought, okay, she's the other daughter because she looks so young. Then that girl said, Mama. I said, so you are the mother? I thought, yes, mashallah. And I really feel these family feelings. And also the hospitality of Pakistani people has been awesome, and I really feel. अब क्या आपको दोबारा बुला के कुछ सुधारती अवार्ड देना पड़ेगा अगले साल जब ये काम कम आएगा? ये बहुत बड़ा काम है। इंशाल्लाह ताला हम अब आगे बहुत चीजें सोच रहे हैं कि हम इस चीज को कहाँ पे अप्रोच इसकी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मेहनत है। एक चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैंने राहत साहब से नहीं की अभी तक, यानी इजाजत नहीं ली हुई कि मुझे ये बतानी है, बट यह है कि वेस्टर्न म्यूजिक का या पॉप म्यूजिक का बहुत बड़ा नाम स्टिंग जो है, स्टिंग की तरफ से एक ऑफर आई थी कुछ महीने पहले और वो कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, और मुझे एग्जैक्टली उस ऑफर का इसलिए पता है क्योंकि वो मैंने ही इनको लाके पहुंचाया था पैगाम उनका जी कि जनाब ये कैनेडी सेंटर में है परफॉर्मेंस अगर इसके लिए करें। भाई साहब अब मुझे पता चला यहाँ पे तो चांद चढ़ा रहे हैं, इनको तो फुर्सत ही नहीं है, अभी तो आप अभी ये चांद ही बकायदा। नहीं जी, आप इस चीज को समझते हैं। मेरे लिए ये बड़ी आई एम वेरी लकी दैट यू अंडरस्टैंड, और मैं वो भी मैं करूंगा। आप जो लेके वो भी एक बड़ी चीज है इंशाल्लाह, वो कोई छोटा आदमी तो नहीं है। ही इज आल्सो वेरी बिग आर्टिस्ट। Yeah, I heard about your voice. We want to hear your voice. My if you voice. can give a glimpse. No, I don't sing. Because he you has a brilliant voice, I tell being you. said by him, it means you really are. He has a bass Yes, voice. yes. Very That good. was for charity.
That's That was what's for even children's makes charity, even more and- Okay, noble cause. charity to me, please. Maybe. I mean, after Ramadan, inshallah. Inshallah. Not during the Ramadan. We'll share it. I mean, I don't have the energy in it. But मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं देखता हूं कि कितना सोशल मीडिया में पीछे आपके खिलाफ भी सब कुछ चल रहा था, लेकिन अल्लाह ने आपको हौसला दिया है कि आप अपने काम पे फोकस्ड हैं और उसी को देख रहे हैं सर। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस चीज पे कि ये जो अब अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे, ये उसके अल्लाह ताला के हाथ में है। एक वो चीज होती है कि अल्लाह ताला एक जब किसी को पसंद नहीं करता और उसको लोग पसंद करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला उस बात पे हंसते हैं कि मैं तो इसको पसंद करता ही नहीं, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि ये इसको तरक्की मिले, मगर लोग इसको तरक्की दे रहे हैं। और दूसरी बात पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं कि जिसको मैं इज्जत देना चाहता हूं, लोग उसको जलील कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको अपनी ईमान में रखे और इस बाबरकत महीने के सदके में सबके घरों में अपना रोशनी आ रहे। आमीन, आमीन, और हम तो हर एक के लिए दुआ कर सकते हैं ना, कि दुआ करते वक्त किसी के लिए बुखल तो नहीं होता ना, किसी के लिए कंजूसी तो नहीं होती। बट Joconda, give me some example about a tenor and a soprano and the variety. Let's say you're playing Cleopatra, not the protagonist, but Cleopatra. How would you do it? I mean, what kind of character would you portray over there? Well, I will be, of course, inspired by the real Cleopatra. I got the chance to be in Egypt 2 times because I got the feel and the vibration from the pyramids itself, which is such a magnetic Do you and realize energetic. that Cleopatra was never buried? Yeah. She was sent in the sea, Yes. in the river. Yeah, that's what I love because she is the fearless person. A mystery. She's a mystery. Yes, I a mean. mystery. And the last pharaoh of Egypt, Yeah. because after that Egypt fell to Romans. Yeah. It was Basically. under then Antonio and Cleopatra, the famous. Yeah. He's from Rome, Antonio from my city. So the typical Italian, Antonio like macho. followed Julius. Okay? Yeah. I mean, he was after Julius. Julius Caesar, of course. Yeah. But But now here is a character. Let me explain the character. Cleopatra, who was married to her brother, she killed her brother. yeah. And then she got married to the younger brother. She killed that brother also. So yeah, that time was Then very she married common. Julius Caesar Yeah. had a son by him, Caesarion. Yeah. And that is where the name Caesarion also Caesarian. comes Yeah. The cut. from. And then after Caesar, she married Anthony Antonio. and had 2 sons by Anthony. Yeah. And again she was killed and banished. Her bodies, Antony's and Cleopatra's bodies are banished. Nobody knows about Yeah, the nobody children. knows. Her daughter started a different, I mean, she was married to a different king and, she lived on, but Yeah. her son is not known. Now that is the role you're playing. Full of anger, full of tragedy. So Yeah. what do we expect in a tenor? In a soprano, you mean? In a soprano. Yeah. First of all, I think the feeling of a kind of madness, of obsession for power, Give me for an example. Give me an example. Not like this. I know. The phantom of the opera is there inside my mind. It's there, the phantom of the opera. She's like an exalted woman. Everything she does for the power and the richness, the materialistic richness. She's like over. She feels like she's a goddess, let's say. So even in, And when I she's feel. being banished out of Alexandria, then what? Yeah, like then that's like the failure, no? Yeah. The coming to know, okay, now
it's really over. it's over. Yeah. So it's like normal. It reminds me also a bit, Electra kind of roles also. So it's Oh, amazing. Wow. it's over, and it's like I my would life. love to And see this. I mean, I've seen Phantom of the Opera, so Yeah. I mean, Yeah. that is Yes. hair-raising. But just now, you seem Vivaldi. Is there any influence over there? Yeah, in the virtuosism, kind of. Yeah, in the virtuosism, and in opera we have different section and different also kind of voice, from the light soprano who does Vivaldi or Rossini, all the coloratura, all the virtuosism, like. For example, il bel momento di gioia e amor, di gioia e amor. So you have to do small notes, all in a sequence, all in the same beat, and very fast. And then we go into the dramatic, like Puccini, when it's legato, it's more conversational, like, I don't know, mi chiamano so it's all very more melodious and more like in a, Okay, so that's and the main thank you. change I of just style, hope that we so. don't get a strike on the YouTube or by the YouTube because you sang a portion out of Phantom of Opera. Okay, and that's it's fine. copyrighted, This is but just few I hope seconds. we can So just get yeah, there with yeah, it. of course. And then, yes. but खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. You're welcome. और मैं बड़ा impress हुआ हूँ, honestly, ये सारे efforts से. ये अब जब अभी ये पूरा जब कंपाइल होगा तो मैं आपको ये सुनीत ज़रूर मैं दूंगा कि ये वो होने जा रहा है कि पहले कभी भी पाकिस्तानी ये सब कॉन्टिनेंट के तारीख में ये दो मिलाप नहीं हुए. And your content. Thank you so Thank much. you, And I thank look you forward to- to seeing more to of you. you. Thank you so much. And My pleasure. in a few days, let's have a performance of you right over here. And let's all get See if I'm inspired by still here. the legendary Pavarotti. And See, I mean, if I'm still here, it will be nice. And that's a We'll humble tribute put- to the great man. That's a very humble tribute. yeah, that's great because actually I got inspired for this fusion and the collaboration also with other singers and other genres. Like he collaborated with Sting, with Yeah. many others He from did- the he pop did with field. Tom Jones Tom, and, yes, and so even with this Western singer. Coldplay, Yeah. you know. एक और चीज मैं John Denver. Yeah. एक और So चीज actually my aim मैं that ऐड करना चाहता हूँ इनकी जियो कांदा की एक जो इनमें इन मुझे क्वालिटी एक और भी एक एक्स्ट्रा क्वालिटी नजर आई. मैंने जितने वेस्टर्न म्यूजिक डायरेक्टर्स को सुना, देखा, काम किया, ऑल राइट द म्यूजिक फर्स्ट. शी डिडंट राइट हर म्यूजिक. You know why? I try to by adopt heart your got it. Because Pavarotti could not read music. And she is his student. No, but I can read. I have 2 degrees Yeah, but Pavarotti in would not University read of Music. I was a that. composer. I read You seven, can Google it. seven You can keys, Google it and the check. septiclaris. I mean, दुनिया के बड़े-बड़े composer जो हैं, they can't read music. Actually, mine is more like when I collaborated with Bollywood, because I'm the creator and first time ever pioneer What's of a Bollywood figure? opera Yeah. style, which is first time ever fusion between Bollywood and opera. I realized how skilled you people from Eastern music, like Pakistani and also Iran, you are in remembering like a computer all the different notes, all the music without even writing. Yeah. That's something that amazed me. Because, I said, how why? these people can do You know this? why? Is some extra skill of your brain.
we in Eastern music have a quarter note as well, Yeah. a half note Yeah. as well. It is Yeah. not just sa, re, Yes, ga, yes, ma. yes, It is yes. sa, sa, sa. Yes, It yes, can be because any scale. Yeah, How because do you write that? Yeah, You can't write that. Of course, and that Yeah. maybe ना, makes you. ये इनको बोलते हैं जो सा और रे के जो दरमियानी एक फासला है, उनको हम कहते हैं श्रुतियां। हाँ, श्रुतियां। श्रुतियां, और हर श्रुति का नाम है। लेकिन लिख नहीं सकते ना, उसको कैसे लिखेंगे? नहीं, हम वो उस श्रुति का नाम लिख दिया करते हैं हम। बट ठीक है, अब जिसको श्रुति का पता होगा या गाएगा वो खंभावती लगाएगा। आप कर रहे हैं ना अलाम पे। अब ये 3 तरीकों से किया, ये लिखा नहीं जा सकता ना। खान साहब हफीज खान साहब ये भी कर लेते थे। Really? ओह यस, खान साहब हफीज, बैर वहीद, यस बैर वहीद साहब जो है वो हर काइंड ऑफ, अच्छा ये कैसी बात है, उनको बैरे क्यों कहते, वो सुनाई नहीं देता था उनको, वो सिर्फ अपना ये अंदाजे से, और उन्होंने उस्ताद कहलवाया। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कंपोजर, द बिगेस्ट कंपोजर इन द वर्ल्ड, बेथोवन, बहरा था। Was He that, could not hear. Oh I mean, he my created yeah, music like so many nobody. symphonies, yeah. यानी और उसकी तीसरी सिम्फनी के बाद he started losing his sound. And और सारा काम उसने मैथ्स का किया। वो कहता था ये हिसाब है, 2 × 2 नफी 2, इस तरह। ये सीधा हमारा वो श्रुतियों वाला तो हम लिख दिया करते। now he's from the 9th symphony is a song is become the hymn of the European Union. That, Yeah. But in Pakistan, most of the people are aware of his symphony number 5th. 5th, yeah, also Yeah. so beautiful. Yeah. He was No, no, actually- no, no. Yeah. But anyway, thank you So, very much for thank joining you to us you, today. thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैं एक दफा दोबारा माजरत कि मैं वो म्यूजिक सुना नहीं सकता, हालांकि मेरे पास है, फुरकान साहब has been kind to give it to me। मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि जब तक तैयार नहीं हो जाता पूरा। तैयार हो तो फिर हम खुद, वो कहते हैं बैंड बाजा बारात लेकर आपके पास हाजिर होंगे। जितने प्यार करने वाले हैं उनका दिल खुश करने के लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो until the next time, अल्लाह हाफिज।